Hare Krishna Mahamantra starts with the innermost chamber and comes out. Guru starts from the outer and goes in. So double, two-way street. Okay, so that is the meaning of this beautiful shloka. Oh, so we'll recite it all together one time. Okay. Oh. Now you know one word, one word. Same thing with Bhagavad Gita. Same thing with Mahamantra. Same thing with anything. When you know what you are doing, then the actions that you are doing are more powerful. All right. So let's start with our chapter 6. Chapter 6, yes. Work-life balance is a component of chapter 6. I love these photos, huh? जो भगवद गीता है एंड जो बीड्स हैं उसमें. So chapter 5, very quick overview. Number 1 is be like a lotus leaf. Do the duty, be detached from results, control the senses. If you want to take away one, you can come closer and take pictures if you want. There is one thing pending for me. I really apologize. I have not put the slides on the group. I will put it by tomorrow 12 noon. Okay? All the slides I can put. Okay? So, yeah, main topics, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएंगी सारी slides. So we may pull out 5-6 main ones and from each chapter and then put it on the group. But उसके लिए फिर मेरे को थोड़ा ज़्यादा time लगेगा. So give me till middle of the week, Wednesday 8 p.m. I'll complete it by then. Okay. All right. One word, if you want to take away from today, it is detached. Detached. So yogis do everything, but they're not attached to anything. 3, 4, 5 classes ago, I had said I'm not attached to my kids, right? Little bit controversial it was, but it is required to start your manthan. आपके मन में मंथन शुरू होना चाहिए. Why to be attached to kids? They are your kids. Take care of them. They're responsible. They're not your kids forever. They're your kids for this lifetime. Make them a good person. Give them good values. Give them good education. Make sure they're taking care of themselves. Make sure you become good individuals. But they're not your personal property. वहीं पर ही सारा गड़बड़ खेल वहीं खत्म हो जाता है. इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं किड्स से that there is no place in the heart for Krishna then. The purpose of life is not to get attached to kids. The purpose of life is to make sure you raise them very, very well, very, very nicely. Do everything, give them proper education, guidance, everything. But why attached? Sadda Munda, you know. It's okay. It's not like a 1 second process.
Yeah, yeah. Even your body is not your personal property. ये तो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा और क्लासेस लगेंगी. How to not be attached to body. You know, Jay Pataka Swami Maharaj is there, one of the gurus. His body doesn't function. His body doesn't function. He dances. His body doesn't function. कहीं कुछ बहुत कुछ गड़बड़ है, you know. But he knows Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya, everything 100%. So he is building the temple in Mayapur. Unka wo project hai. So he said, I will not leave my body until this project is complete. So he will not leave his body. But how much? Can't even move. But he does his and prayers. Just see some of the video. Jai Pataka Swami. Pataka is what? जो ऊपर ध्वज लहराता है ना, उसको पटाखा कहते हैं. पताका कहते हैं, लेकिन because English there, so now he's called Jai Pataka only. They can't say ta. So he was one of Prabhupada's initial disciples. He started the whole movement in Bangladesh. He used to sleep on the floor and whatnot. He's not your body. He's not his. So if you see the Maharaj of the movement, you will clearly see he's not his body. I was with my Guru Maharaj, 78 years old. He fell down, fractured his hand. And next day in the morning, he was giving Diksha, initiations. 78 years old, hand fractured, shoulder hurt. And next day in the morning, 6 o'clock, he's doing that. So that's a very high level, but it can be achieved and attained by anyone. Just follow the process. And detachment, nobody is saying detachment means go to Himalayas. No, stay in your home, do your duty. That's what Krishna is saying so far. This is your duty, you do your duty and be detached. So, double D, do the duty and be detached. Some people think detached means ab mere ko kuch karna nahi hai. No, everything you have to do, but be detached. Okay. 3 doers. Hare Krishna, Jitu Prabhu. Body, soul, super soul. Equal vision. Equal vision is something that is a source of happiness for us. Chapter 6 में इसमें even deeper जाके बताया है. Can you see your friend and your enemy in the same way? Okay. So this is a short, quick overview, introduction to Ashtanga Yoga, and peace formula is everything. God is a proprietor. So we will do. So these are the chapters covered so far. Number 1 was setting the scene, which is basically talking about all the five subject matters of Gita. Second is contents of Gita summarized. Here, Duryodhan was talking about, he was telling Bhishma Dev, look, you have trained all these people and now they're ready to kill you, right? He was mocking. This is also where Arjuna gave up the fight. He said, I don't want to fight. मेरे को ऐसा राज सिंहासन चाहिए ही नहीं, which is laden with the blood of my grandfather and cousins. So that's what his thought process was, which is shying away from his duty. That's then Krishna starts to speak in chapter number 2. Just keep your phones on silent if possible. Thank you. Hare Krishna. And third is Karma Yoga. This is where action. What are the 3 types of actions? Anybody remembers?
Three types of things, three types of actions. Yeah, that is good, but that is one. I was asking something else, but what are those three gunas? Yes, so teen guna are that. They are sattvic gun, which is goodness, tamo gun, which is ignorance, rajasic gun, which is passion. But then there is action, inaction, and non-action. Yes, उसके ऊपर तो बहुत चर्चा हुआ था हमारा. Action, inaction, non-action. Okay, that was karma yoga. Fourth is then transcendental knowledge. This is where we started. Welcome. आइए, बैठा भी करो क्लास में कभी कभी, फोटो लेके चले जाते सिर्फ. So transcendental knowledge, this is where we discussed what is karma, what is akarma, and what is vikarma. Then karma yoga, which is action in Krishna consciousness. Isme there was a very good discussion around. Anybody remembers chapter 5? Abhi humne dekha one or two things that you remember from that. Detached, right? Yes. So chapter 6. Chapter 6, there are four main topics of chapter 6. One is mind is enemy or friend. Second is Ashtang Yoga. Okay. Third is destination of an unsuccessful yogi. People who start the process but they're unsuccessful. What happens to them? And the fourth is what is a topmost yogi. So the name of the chapter 6 is Dhyan Yoga, the art of meditation in English. Dhyan Yoga. अब हमने कर्म योग के ऊपर देखा. So कर्म करेंगे तो उसका what is the science and the logic of कर्म? You do an action, there will be a reaction. You do an action, you do good action, good reaction, bad reaction. If you do action for Krishna, that is considered no action, so there is no reaction of that. That is Karma Yoga. Now we are talking next level of yoga, which is Dhyan Yoga. Dhyan Yoga kya hota hai? Okay. Then we will talk Ashtang Yoga. Then we will talk Bhakti Yoga. Okay. So there are levels of yoga. Now, congratulations to all of you. If you make it to the next class, you have passed through the 1/3 of Bhagavad Gita. Most people drop off. So let's start. Nature of mind. And then yoga redefined. Nature of mind. Anybody wants to, what is the nature of mind? Yeah. Right? It is compared to प्रभु बाद में ले लेना. हरे कृष्णा प्रभु बाद में ले लेना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अभी. आप भी मिस कर रहे हैं क्लास को. थैंक यू. हरे कृष्णा. So mind is compared to a drunken monkey. जो मंकी होता है, बंदर है, उसकी मूवमेंट कहाँ जाएगी नेक्स्ट, इवन ही डजंट नो. Anywhere, you just go anywhere, any direction. He also doesn't know. उसको कहते हैं चंचल. Chanchal means he is unpredictable. Unpredictable. Where will it go? Where will it go? What will it say? What will it do? Nobody knows. Now imagine if you have उसने शराब पी हुई है बहुत सारी. Drunken monkey. Now he is 100 times worse. So that is how mind is defined. So
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे शत्रु वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. For him who has conquered the mind is the best of friends. Jitaha. Jitaha. Jitaha means you have won. So it starts with bandhur. Bandhur is friend, bandhu. Bandhur atmat manastasya yenat maivatmana jitaha. The one who has won, jitaha means you have won your mind. But for the one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. You know, people commit suicide because their mind tells them to commit suicide. It has convinces them to commit suicide. Very serious. It is very serious. When the mind is your enemy, you can destroy anything, including yourself. And when your mind is your friend, you are very peaceful, no matter what environment you are in. Bhagat Singh, for example, you know, he said, मेरे को कोई मार नहीं सकता, मैं डालूंगा फंदा अपने गले में. I choose to give my life for my country. You are not killing me. He was in the jail, he was happy. Nelson Mandela, 27 years in the prison. 27 years he was in the prison. If we are put for 27 hours in the prison, we will be very miserable. And he came out happy. Mind is your friend. Then the circumstances don't impact. Hare Bol. So let's look at two different types of situations. When the mind is friend and when your mind is your enemy, what are the symptoms? When the mind is your friend, it follows the direction, your direction, what you're telling him to do. It makes progressive and healthy choices. It is detached from sense gratification. And the result is freedom and elevation. Your mind is your friend, then you and your mind are one. Understand? Opposite nahi hai. It's like if you have a friend outside, how will it be, right? You will love to be in the company of that person. What you say, that person understands and likes. You are detached from sense gratification. Senses we saw in chapter 4, right? 5 senses. If you're engaged in gratifying your senses, see, senses have sense objects. So eyes have vision, and then there is chitra hai. There is pictures to see, scenery to see. Nashika has smell. So there are a lot of different smells. And then ears have sense object is sound. And then jiva has a sense object of taste. And then skin has the sense object of touch. अगर हम अपने senses को gratify करने में लगे रहते हैं, we become slave of our senses.
There is no end to how much you can satisfy your senses. Actually, the design of the senses, they were designed to keep you enslaved in Maya. How Maya kaise bandhti hai is you will just be bound, you will just be working to satisfy your senses. Look at the world outside. Yeah. Look at the world. What is the world like? They like to watch IPL. क्या हो रहा है उनकी लाइफ में? हो सकता है जुआ खेल रहे हो, वो पैसा लगाया हो, maybe they win some money. What is happening? Their mind is getting satisfied. They feel the high and the low and the high and the low. You go to the mall, anywhere you look, there is something you want to buy. Yes or no? Anyway, the malls are the worst of the places if you want to be a spiritualist. Don't go to the mall. Don't go to the mall. This is where my leather pant story comes in, that I put in. I was in the US. I wanted to have New Year party. I will wear a leather pant no matter what. I was like that. Go to New York City and I think it's 32nd or 34th Street, 5th Avenue. Gap store है वहां पर. उस टाइम पे गैप इतना कॉमन नहीं था. अब तो गैप ऐसा हो गया यार, अब गैप मत पहनाओ यार, अब कुछ और पहनाओ यार, right? That was the Gap store, big Gap store, $100. I said, I want to buy a $100 leather pant. Why? Because you're just gratifying your senses. And then that was not sufficient. Then I wanted a green silk shirt on top of that. New Year party, yaar, millennium ka that too. 2000. Once in 100 years it comes. Right? I was like that. Everybody is like that because we live in a world which you are just a consumer. And there are 1 million people who have 1 million different products to sell you. Everything from watches to glasses to shoes to ties to shirts to hair products to shaving creams to God knows what. Right? It's just gratifying your senses. Oh, wow. The beautiful cashmere silk, cashmere sweater. Beautiful. No end to it. Fine, you can have one or two things that you like. But that is sense gratification. So you are free from sense gratification. Meaning, if you get silk, you wear silk. If you get cotton, you wear cotton. You don't have a need for it. You don't have a need, you don't have a hankering for it. That's the word. Hankering means now, no matter what, you look at that Black Friday sale and all that. कितना लंबा लाइन लगता है to buy a new iPhone comes out, लगता है पता नहीं क्या आ रहा है यहाँ पर, भगवान मिल रहे हैं लगता है, right? 3,000 people standing in line to buy a new cell phone, new iPhone. That is hankering. Hankering means I can't live without it. I need it right now. I need it right now. It's addiction. Enemy. When your mind is your enemy, what are the symptoms? It follows the sinful desires like lust, anger, and greed. दिखता नहीं है ये, दूसरों का दिख जाता है, अपना खुद का नहीं दिखता है. You will see that person, उसको बहुत greed है, but yourself you can't see. It is your blind spot. That is Maya. Blind spot meaning you can't see. Blind spot is when we are driving, if you're looking in the mirror, ऐसा देखा, so the vision is like this. And then the rear view mirrors, the vision is straight. So there is one area right here behind the back door, which you can't see in any of the mirrors. It is called that is a blind spot. No matter कितने शीशे लगा लो, एक छोटा सा एरिया होगा that you can't see. It is called blind spot. You can't see it only. अगर देख लेते तो दिख जाता. You have to turn and then actually see, then you can see. So in that, there is blind spots in life also. In spirituality,
There are blind spots. You just can't see it. That's why you need a guru. That's why you need a teacher. Teacher can show you your blind spot. Mm. 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 Yeah, the world will never become too saintly, actually. Yeah, because we're in a Kali Yuga, it will become more and more worse. But yeah, next slide, we'll talk about this. Huh? You'll be irritated, agitated, and misguided. It'll misguide you, irritate you, agitate you. See, when the mind is not in your control now, any small little thing somebody says irritates you, can irritate you. Any small little thing that doesn't happen according to you will just irritate you. You know? You spend most of your time during the day just irritated. Why? Why is he doing like that? Why is she doing like that? You may not say anything back to them. Sometimes in relationships, there are relationships where you don't want to say or can't say, but inside you're burning. Like, मर जाए तो अच्छा हो. Actually, you say that. कहाँ सर फोड़ लिया मैंने अपना? पता था. यहाँ पर शादी करा दी. इस घर में देखा नहीं था क्या? आई थी क्या देखने आए थे? क्या देख के गए थे यहाँ पर? खुद तो बैठे हुए, मेरा सर फाड़ दिया यहाँ पर आकर. और हाँ से तब तक आवाज आती है, सुन रहे हो? हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. जहां जाऊंगा यही हूँ. कहीं जाऊंगा. That doesn't mean the person is bad. That just means our mind is our enemy. Remember that. I'm not saying the person is bad and you're good. I'm saying your mind is your enemy at the moment. Your mind will make you hate people. Your mind will make you office में. You look around. कितने लोगों के साथ काम करते हो? प्रभु, I forgot your name. दीपक, right? दीपक नाम था ना आपका? प्रदीप. I got it. प्रदीप जी उड़ीसा से ही हैं. I met him when we were starting the program. Jagannath ji, Orissa. So look around. Your mind will have judgment about everybody in your personal life and your work. If I ask you to make a list of good, words, good person, horrible person, draw the line. See how much list you have of horrible. ऐसे जाएगी वो. Sir, next पन्ना. डायरेक्टरी बन जाएगी इतनी मोटी. गुड पीपल, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकेंड. नहीं, गुड. पापा गुड है. पापा गुड है. सबके पापा गुड होते हैं, है ना? किसी के पापा बैड नहीं होते. पापा गुड है, पापा गुड है. बस इसके साथ शादी करा दी, वही गलत काम किया मेरा. बाकी सब तो ठीक है. पापा इज गुड. पापा इज गुड. ग्रेट ग्रैंडफादर. My grandfather was great. Now I'll tell you a secret. Secret. किसको सुनना है? Yes, yes बोलो. बताओ बोलो. बताओ. Secret ऐसे नहीं बताए जाते. Secret बताओ. हैं? एक बार जोर की. बताओ. जो आपके ग्रैंडफादर हैं, उनकी वाइफ, जो आपकी ग्रैंडमदर है, उनकी लिस्ट देखना कभी. उनकी लिस्ट में उनके हस्बैंड ग्रेड में नहीं होंगे. कहां होंगे? गुड में डालना पड़ेगा, बिकॉज पतिव्रता वाइफ होती है यहां पर. हाँ, सब माइंड का खेल है, कोई रियलिटी नहीं है. सब माइंड का खेल है. इट इज अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. द वेस्टर्न वर्ल्ड, हमारा इंडिया भी होता जा रहा है. The Western world is designed for sense gratification. Not for all of you, but for like preachers, we
डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफी। क्यों नहीं पीना है? बिकॉज इट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। इफ वी कांट गिव अप टी एंड कॉफी, क्या प्रीच करोगे जाकर तुम लोगों को? और तुम्हारे बोलने से कौन क्या छोड़ देगा? खुद तो बड़ी ठंड है, चैन पड़ गया हो। हमें तो ऐसे ही चैन पड़ जाता है, हरे कृष्णा। गर्मी गर्मी आ गई, ज्यादा गर्मी हो रही, पसीने आ रहे, उतार दो। नाम की पावर को समझा नहीं, अगर नाम क्या नहीं कर सकता है। एवरीथिंग इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। सुबह उठते ही सेंस ग्रेटिफिकेशन चालू होता है। पता है कैसे? न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर नहीं आया आज। सेंस ग्रेटिफिकेशन। माइंड हैज टू नो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ। तो माइंड इज सो, इतना उसको भर के रखा है। आई गेट ऑल द न्यूज आई नीड टू डू माई जॉब, उतने तक ही। बाकी मेरे को संसार से कोई लेना देना नहीं है। नाउ यू मे से यू आर कि मतलब फिर आप लाइक दिस दैट दैट इज, हाँ ठीक है, आई विल नॉट बी अ पॉलिटिशियन। बट पॉलिटिशियन का गुरु कौन होता है? स्पिरिचुअलिस्ट ही होता है, बिकॉज ही कैन सी थ्रू। सेकेंड, फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? चाय चाहिए। चाय के बिना तो नींद नहीं खुलती। नींद नहीं खुल रही है, आज चाय नहीं मिली, आज दूध नहीं आया, सुबह नींद नहीं खुल रही, चाय नहीं मिली है, 9:30 बज गया है यार। जाके लेके आओ, किसी को भेजो दूध लेके आए, चाय तो मिले, नींद तो खुले, तब तो दिन शुरू हो। वी हैव फेड दैट टू अवर माइंड। माइंड की कोई गलती नहीं है। माइंड वहीं जाता है जो हमने उसको बताया अभी तक। अगर हमने अपने माइंड को ट्रेन किया है जज पीपल एवरीबडी, सब बेवकूफ है, तो वी विल जज, कीप जजिंग एवरीबडी। If we have trained our mind to love people, it will keep loving everybody, no matter what, who they are. Hmm? Then नाश्ता क्या है अभी? यार अचार होना चाहिए, अच्छा अचार होना चाहिए यार, परोठा का अचार होना चाहिए यार, नींबू वाला डाला था यार, गाजर मूली का डाला करो यार, गाजर मूली का अचार करो। ये क्या खट्टा खट्टा वाला है, चटनी बनाओ, इसकी मुरब्बे का बनाओ यार, आंवले का बनाओ, आंवले का सीजन चल रहा है। वन आफ्टर अदर। देन अब आज शर्ट कौन सी पहननी है? व्हाइट कलर की पहननी है कि ब्लू कलर की पहननी है? नहीं यार, ब्लू नहीं यार, आज बड़ा मतलब थोड़ा वो लग रहा है ऐसा, डल डल सा लग रहा है, पिंक शर्ट पहनूंगा आज, मैं पिंक पहनूंगा। एवरीथिंग योर माइंड इज, आर यू डूइंग द टॉकिंग? जस्ट ऑब्जर्व, आर यू डूइंग द टॉकिंग और इज योर माइंड डूइंग द वर्क? सो व्हाट इज हैपनिंग? टेल मी व्हाट इज हैपनिंग? आर यू डूइंग द वर्क और आर यू जस्ट अ स्लेव ऑफ योर माइंड इज टेलिंग यू? What? You're just a slave of your what your mind tells you, right? Mind says आज परोठा खाना, आज परोठे खाएंगे, उसका पेट खराब हो जाता है। Do you have any control? उतने में अगर काम वाली बाई नहीं आई आज, तो बस तो हो गया फिर तो काम, right? What life do you just look into your life? Do you live your life or is your mind just saying things and you are just doing that? Most of it, most of it. Hmm? Thank God we have families. Thank God we have पूजा पाठ होता है, घंटी बजती है तो वी वेक अप, टन 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 आरती होती है ना, तो मोस्ट पीपल वेक अप एट दैट टाइम। शंख बजता है, कुछ होता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, अच्छा चलो ठीक है, हाँ ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। दैट इज व्हाई आई सेड इंटेग्रिटी, क्योंकि योर माइंड विल कम अप विद सम और द अदर रीजन टू नॉट कीप योर वर्ड। Something or the, and exceptions are fine, exceptions can happen, but if you give your word, you keep your word, you honor your word. That is the first principle of spirituality. Honor your word. Whatever word you have given, you've got to honor that. If you don't honor your word, you can't attain Krishna. You're a liar. चोरी चुपके उसको बोला था कि ये करना है, वो करना है, फिर किया नहीं, अब चोरी मुंह छुपा रहे वहां, कहीं उसको ध्यान हो, सामने पड़ जाए वो उस रास्ते निकल गए। तो चोर को कृष्णा नहीं मिलते हैं।
Result is degrade and entanglement. Entanglement with what? Sense gratification. ये घर हो गया, वो घर हो गया, अब ये घर चाहिए, वहां 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 चाहिए, यहाँ चाहिए, वहां चाहिए, यहाँ चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, वो चाहिए. Some people are very good with stock markets. सब कुछ ही एनालाइज किया हुआ है, सब कुछ ही वो किया हुआ है. You know, there was this guy, I'm forgetting his name. Ponzi scheme शुरू किया था उसने. जीतू प्रभु, you remember? यूएस में था. What was his name? Ponzi scheme किया था उसने billions of dollars का. Oh, I'm forgetting his name. हाँ? सब प्राइम नहीं. Ponzi scheme मतलब कुछ था नहीं, लेकिन everybody was getting lots of money back. Russell something, forgetting the name. It'll come to my mind. Anyways, so he just wanted to prove that all of these investment bankers, I am better than them. 200 साल का सजा हुआ, 200 years he went into prison. यूएस में 200 years का भी होता है, basically what we call life sentence, but they call it double life sentence. People are go crazy after a while. इतना दिमाग था उसका, कहीं और लगाता तो पता नहीं क्या क्या करता. हर्षद मेहता, सेम थिंग. कहीं और लगाता, अच्छी जगह लगा दिमाग, तो इंडिया को पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंचा देता, लेकिन दिमाग गलत जगह पे लगाया. वाई? हिज ब्रेन वाज, he was very intelligent, but his mind was not in his control. Everybody who's doing, everybody, right? They have intelligence, but their mind is not in the control. Now I have good news, bad news. कौन सा पहले सुनोगे? हाँ, ये अच्छा पर्सपेक्टिव है, with the reason. Bad news, good news. Where is the devil and where is the divine? Where is it? सच्ची? अच्छा, पूछता हूं मैं, रावण किसके अंदर है? कौन रावण है? सच्ची? अच्छा, इसको अलग तरीके से बोलो थोड़ा. नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत अच्छा एस्केप रूट है. सबने बोला सबके अंदर, ये बोलो मेरे अंदर. कहाँ है? कहाँ है रावण? कहाँ है? राम कहाँ है? हु विल विन? अब ये $1,000,000 क्वेश्चन हो गया. बोलो, पूछो पूछो. ऐसे नहीं पूछता मैं $1,000,000 क्वेश्चन यार, कुछ बताना पड़ेगा. कुछ तो, या तो पैसा फेंको, नहीं तो बोलो पूछो पूछो. या तो $1,000,000 फेंको, नहीं तो बोलो हरे कृष्णा. आसान है ना? देखो, $1,000,000 इसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने आज डिस्काउंट दे दिया. अच्छा मूड है. बोलो हरे कृष्णा. पूछो पूछो. $1,000,000 क्वेश्चन. हु विल विन, राम और रावण? हाउ? Okay. The one you feed will win. जिसको चारा डालोगे वही जीतेगा. रावण को डालोगे तो रावण जीतेगा, राम को डालोगे तो राम जीतेगा. And there will be times when Ravan will win. But don't stop. मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है. This is actually true. सतयुग में Ram and Ravan are in different universes. They live in different universe. Yeah. Then in the next yuga, in Treta Yuga, they live in the same universe, but different planets. In Treta Yuga, they live in the same planet. In Dwapar Yuga, sorry, they live in the same planet, but different bodies. Physical separation hota hai. In Kali Yuga, Ram and Ravan live in the same body. All inside me.
So spirituality is the process of feeding Ram. Ram will win. Nothing will happen to you. थोड़ा सा मैं बताता हूँ. प्रियंका मैम ने बोला था बोरिंग हो जाएगी लाइफ. लोगों की तो पार्टी 4 बजे शुरू होती खत्म होती है, राइट? हमारी तो पार्टी 4 बजे शुरू होती है. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. 4 बजे या 4:30 बजे तो हम कीर्तन कर रहे होते हैं. ये धूम मचा के, छोटा मोटा नहीं, धूम मचा के कीर्तन करते हैं. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. कहाँ जा रहे हो? 4 बजे सोने के लिए. ब्रह्म मुहूर्त अभी शुरू हुआ है. यू नो द पार्टी पीपल दे कांट स्टे अवेक बियॉन्ड 4. ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है. योर तो समय भी 3 गुणों के उसमें है. ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, इट इज गुडनेस, मूड ऑफ गुडनेस. यू विल हैव गुड थॉट्स. सुबह सुबह लोग भजन ही लगाते हैं, कुछ मन ही नहीं करेगा. डे इज पैशन, काम ही करना. यू डोंट वांट आल्सो योर माइंड विल गो कि ये वो डेडलाइन वर्क, दिस दैट दिस. जो दिन का समय होता है, रात का समय तमोगुण का समय हो जाता है. थोड़ा मिल जाएगा तो अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा. You will automatically the time is like that, and the one who doesn't have the mind in control, the mind will just go zoom 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 zoom, zoom. And the one who has mind under control, nothing. All time is Krishna time. Your work is also spiritual actually, because you're practicing all this at work. Now, life lesson. Who will read this? Mata, go ahead. Prabhu, say, read it one more time, please, loudly. I'm not this body. I'm not this body. One more person. This side. Yes, Prabhu. I'm not this body. I'm not this mind. Also, by God's grace, I can control. पहला तो है I'm not this body. Still easy to understand. Second one is a little bit more subtle because you can't see the mind, na? Yeah, go ahead. You read it. Read it one more time. I'm not this body. I'm not this mind also. By Lord's grace. Yeah. I'm not this body. I'm not this mind. I have a body and I have a mind. Now I have another, it's a $1 billion question. Then who are you? Who are you? If I'm not this body, I'm not this mind also, then who are you? Guess मार रहे हो कि पता है? So who but? Soul meaning what? Okay. 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 Part and parcel of Krishna. Okay. Why are we here then? We are here because we like to be here. We like to listen of this. Okay. सच्ची सच्ची बता दूं, सच्ची सच्ची कर लोगे डाइजेस्ट? थोड़ा हाई फिलॉसफी है, कर लोगे पक्का? कि अच्छा अच्छा बताऊं सिर्फ? नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा है. द वर्ल्ड इज अ ग्रेट प्लेस, हैप्पी प्लेस, एवरीथिंग इज फाइन एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. किसी ने जाके देखा नहीं बर्तन फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? We are here because we became envious of Krishna. So the material world was created for those who want to be in control, those who want to be God, those who want to play God.
God said, okay, you go there, and then over there, you can do this if you want. That was his compassion, that he created the material world so that the souls can come here and play God. Then at some point in time, the soul, after getting a lot of beating, realizes and understands that यहाँ पर bliss and joy नहीं है, या जो भी था वो मैंने कर लिया. I want to come back now. I want to come back to Krishna. I want to come over there. That's what is called going back to Godhead. So when we say, who am I? Mata said, I'm part and parcel of Krishna. Part and parcel of Krishna meaning Krishna is in the center and I am somehow serving Krishna. Now I'm not saying he. Now we go back to Godhead tomorrow. But we can start the process. We can live our life according to the principles of Krishna. And principles of Krishna kya hai? What is the highest principle of Krishna? No. What is the highest principle of Krishna? What is the highest principle? No. What is the highest? Huh? Okay, so that's a good start. Be good, do good. That's a very, be good, do good. Very nice. You've come for the first time, ma'am? Last Sunday you were great. Thank you for coming back. Yes. I remember Prabhuji sitting here. But yeah. What is the highest principle of spirituality, of Krishna consciousness? Do action and surrender. No. Try some more. Very good. That is a very, that's one of the principles. That's not the highest principle though. Good. Very good. Good principle, but not the highest one. Which is the highest principle? Bhakti. Good. What is bhakti? Good, great. Selfless service is that. What is it in one word? This is very good way manthan karne ka. Clarity comes from this. What is it called? Selfless service. Seva is selfless service, different way of saying the same thing. But how is it experienced? What do you give to the other person? So I'll tell the answer then. You enable the other person to do this. So highest principle की बात कर रहा हूं मैं. Highest principle of spirituality, Krishna consciousness, is love. Prem dhan. To love people. And love is not conditional. You love everyone and everything. Unconditional. You love the trees, you love the plants, you love the birds, you love the animals, you love people, you love Krishna, you love everything. You are love. That is the highest principle of spirituality. That is Ram. That is Ram. Ram is love. He was ready to forgive Ravan also, who stole his wife. Sita ji was not stolen, you know that, right? Story पता है वो वाली आपको? Sita ji went into the fire and कौन सी सीता को लेके गया था रावण? Chaya Sita, the perchai of Sita ji, because if he would have touched Sita ji, he would have burned and died there only. And then when she came back, then she went into the fire again, and the real Sita ji came out of that. लेकिन हमारे शास्त्रों को बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है. मूवीज तो
are horrible. They're so beautiful. उनको पता था. Sita ji knew Lakshman ji will never leave her alone. You know what she said to Lakshman ji? जब वो गया था वहां पर हिरन, राइट? तो उसने बोला सीते. तो सीता जी said and heard that Ram is in trouble. लक्ष्मण कहता है अरे राम इन ट्रबल हो ही नहीं सकता यार, तुम क्या बात कर रहे हो? रामचंद्र जी इन ट्रबल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आई नो हु इज रामचंद्र जी. He can, nobody can beat him, put him in trouble. What are you saying? Then what did Sita ji say? She said something. She had to say something. Ki Lakshman was ki mere Ramchandra ji. There is nothing that he cannot handle. So I don't have to go. He has given me the order to be here and protect you. You know what she said? You want to enjoy me. That's why you're not going. Because she knew otherwise he will not go. Now धर्म संकट आ गया बहुत बड़ा उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए, कि my भाभी is saying that want to, what are you like, I can't even say that. And he had to go. तो वो रिंग लेके आए थे जब हनुमान जी, सीता जी ने रिंग दी थी कि go and give this, तो वो लाए रिंग. So Ramchandra ji, everything that Ramchandra ji does and everything Krishna does, by the way, is called what? It is Leela. Leela meaning he is doing it as an acting, but it looks like it's real, like actual, but it is just to give a message. It is just a story. It is a play happening to teach us something. That's why it's called Leela. So जब वो लेके आए हनुमान जी ने अंगूठी दी, लक्ष्मण जी ने को बताया गया कि ये अंगूठी है. बोले मेरे को पता ही नहीं, मैंने कभी उनके पैर के ऊपर देखा ही नहीं, सिर्फ पैर ही देखे हैं, मेरे को नहीं पता कि उनकी अंगूठी है कि नहीं है. That is the beauty of our culture. लेकिन ये ब्यूटी लुप्त होती जा रही है. Why I decided to become a preacher? Because if somebody, we don't do preaching in 100 200 years, our Indian children will know about rap songs and everything else the Western world has to teach them, and they will not know the most beautiful culture in the whole world. Grahastha ashram hai, brahmachari ashram hai. You get married to one woman, one man, and you stay. Now, okay, fine. There can be circumstances when something has to be done differently. Fine, acceptable. But in you're not signing prenup agreements and all that, which has now become so common. वो signing, वो शादी इसलिए हो रही है कि भाई अगर देख, अगर you go away, maximum I will give you is this. Yeah, that is a culture. I don't have track of time today. So what time is it today? 12:40. ठीक है. एक slide करेंगे और then I'll tell you a nice story. So yoga. What is yoga? Sorry, actually, let's finish this. So रावण को feed करने के लिए feed your senses. Hence, this is the worst one. Worst one. इसको दारू चाहिए, इसको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. And then speak. सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए. You play this, you do that. Everything. You will go crazy if you try to satisfy this. You know, I will say something little mature. Everybody can handle. थोड़ा strong language हो जाएगा. थोड़ा नहीं, बहुत strong language हो जाएगा. Is it okay? Yeah. Sex desire comes from here. Even in old age,
People are not able to leave that. So mind what you eat. For preachers, जैसे हम लोग हैं, we don't eat anything that is not offered. We only eat prasad. Only eat prasad. We don't even eat anything outside. Now, if I come to some of your homes, if Prabhuji's come to some of your homes, we may eat something. But normally we don't eat anything not cooked by somebody who's chanting and following 4 regulative principles. If you're having illicit sex and I eat something you've cooked, it'll get transferred to my consciousness. We are very careful of what we put in our mouth. I don't eat. I travel a lot. I don't eat. घर से एक चिवड़ा होता है ना, चिवड़ा, सबको पता है चिवड़ा क्या होता है ना, और दही तो मिल ही जाता है बाहर में, दही एंड चिवड़ा एंड फ्रूट्स, काटे उसको, फ्रूट्स को. I don't eat anything outside. Whenever I travel, wherever I travel. नारियल पानी is sufficient. 3 नारियल पानी अगर दिन में पिया, don't need to eat anything. Krishna gives you the power. You just do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Don't need to do anything. And then we practice also, no? We practice every 15 days. We don't eat Ekadashi में. So the mind, पता है, mind कहता है यार ये तो पागल है, तो पागल आदमी है, खाना ही नहीं खा रहा है ये, मेरे को खाना चाहिए, खाया, क्या कर रहा है ये, पागल है, मेरे को नहीं रहना इसके साथ, मैं कहीं और जा रहा हूँ. The Ravan says like that. यार सुबह से बंदे ने खाना नहीं खाया. 2 माइंड बात कर रहे हो अगर, कि तेरा वाला क्या कर रहा है, मेरा और नर्मदा जीवन प्रभु जी का करता है कभी कोई माइंड, हम लोग कि तेरा वाला क्या रहा, क्या सुबह से माला कर रहा है, सुबह से मैं बोल रहा हूँ मूवी चल ले, कहता है मूवी तो, और मेरे वाले ने तो पिछले 10 साल से मूवी देखी, कहता है मेरे वाले में नहीं देखी यार, आज नई आई हुई है, मैं उस दिन देख रहा था, कोई बात कर रहा था बोलने, क्या कंटारा आई है, कौन सी आई है, समथिंग कहते हैं तेरे वाले ने देखी, कहते ना मेरे वाले ने देखी, जिसने देखी, किसी ने देख ली तो घर में उसने 4 लेक्चर और सुना दिया उसको कि तू क्या देख रहा है, कहां समय बर्बाद कर रहा है. कहता है यार तेरा वाला तो बहुत स्ट्रिक्ट है. कहता है तू मेरे वाले की सुन लेगा तो तू पता नहीं कहां रहेगा. That's how mind, you will notice. If we start chanting in the morning, how many of you will come? Do half an hour chanting. Raise your hands. एक सेकंड, हाँ मैं पहले ले लेता हूँ. I will come if there are 15 people. Half an hour chanting. You join anytime, you leave anytime. 10 मिनट का chanting करो. Convenient time. अभी थोड़ा ठंड है तो जल्दी नहीं करेंगे, बट 7 से 7:30 बच्चों का, 6:30 से 7 is better. When you do chanting, na, you will. Yeah, so we'll talk. We'll see that. If you do chanting, na, you'll see your mind is, जैसे कि ये दिख रहा है ना, एक्चुअल में दिख रहा है, ऐसे दिखेगा आपका माइंड सेपरेट. हाँ क्या? You'll see your mind when you do chanting, you'll see your mind. बेचारा क्या कर रहा है, माइंड बोलेगा खिला दो, मुर्गी नहीं तोड़ी मैंने 15 दिन से, अब क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों मार रहे हो. तो बोलो यार मैंने बहुत तोड़ ली 40 साल मुर्गी, अब नहीं तोड़नी मेरे को मुर्गी, तो कहीं और जा. ठीक है, कहीं और चले जाता हूँ. I was in the US. I was doing everything at US. No, US जाता क्यों है कोई भक्त थोड़ी जाता है यूएस. 40-20 साल की उम्र को पागल कुत्ते ने काटा जो यूएस में जाएंगे. यहाँ पर वहां कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है. क्यों जाता कोई यूएस? पढ़ाई करने जाता है. Who thinks कोई यूएस पढ़ाई करने जाता है? और मैं तो 2 पढ़ाई करी, डबल MS, डबल मास्टर्स डिग्री. क्या करना है मास्टर्स डिग्री, आराम से. हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस मैं पढ़ाता था. 3 क्लासेस जो होती थी उनको बोलता है सर breaking all 4 regulative principles 22 times in a day. If I can transform, anybody can transform. So don't think कि अगर your habits are bad, or if I'm saying you're bad. No, nobody is bad.
Even you are not bad, and when I'm not great. So you're doing XYZ. I was also doing XYZ at one time. इसीलिए कृष्णा ने भेजा है मेरे को यहाँ पर कि तू जा यहाँ पर, तूने जो जो कर्म किए हैं ना वो चाहिए, वैसे ही चाहिए. सो जगन्नाथ को बुलाया था पतित पावन, द वन हु इज द मोस्ट फॉलन, ही पिक्स हिम अप and raises him. So preachers don't say we are so great. We say we are the सबसे जो नीचे वाला है ना, गंदे वाले, गिरे वाले, सबसे हॉरिबल. We are that. It's just that Chaitanya Mahaprabhu has lifted us up, taken us out of the gutter to talk about him. But we are very fallen. We are fallen. We are very fallen souls. We have done some horrible things in life. It's just the grace of Krishna. I don't know how. Yes, I had a desire in my heart that I want to do something for God. I had little desire, and then he reciprocated. So the Lord is very merciful. Okay, we'll stop here. Next topic, yoga wala next में cover करेंगे. But again, don't miss the next class क्योंकि ये सब है, मैं दिखा देता हूँ. This is my enticing, लालच दे रहा हूँ, आ जाना. Okay, ये next में cover करेंगे. Life lesson cover करेंगे. Your goal, what is it? And ये अष्टांग योग cover करेंगे. Ashtang Yoga is the world outside is a reflection of what is inside you. अगर सब रावण हैं आपके इर्द गिर्द, अपने अंदर के रावण को निकाल दो, सब राम बन जाएंगे. आज बोलो हरि बोल. ओके, सो द्वारिकाधीश, द्वारिका गया है कोई? कौन कौन गया द्वारिकाधीश? द्वारिकाधीश के बारे में तो गए भी हैं काफी लोग. ग्रेट, हरि बोल. डाकोर धाम के बारे में किस किस को पता है? जो जो द्वारिकाधीश गए हैं. नहीं पता अगर तो फिर गुड, तो फिर सब, then this will be a new story for all of you. So Dwarika is the place where Dwarikadhish reside. Dwarikadhish means the Dhish, the king of Dwarika. This is where Mahapar Krishna lives as the king with his 16,108 wives. Each one of them has a palace. It's a controversial topic, and some other time we will talk. So people have this question: how come Krishna has so many wives and like that? So it is not a material marriage. Husband-wife relationship of Krishna with his wives is not the same as, the material relationship. And Krishna also wanted to demonstrate a particular rasa called Parakiya ras. Parakiya ras is, Swakiya is I'm enjoying my own, Parakiya is I'm enjoying someone else's. So the pastime is, because otherwise married women cannot love Krishna. He's another man. Na? How can a married woman then love Krishna? So that's the leela of even Radha Rani. But वो लीला है, ये समझना पड़ेगा. Radha and Krishna are married. ब्रह्मा जी ने उनकी शादी कराई थी. And कुबेर जी उस पे उन्हें दहेज दिया था. The god of wealth himself. So like that. Anyway, so द्वारिकाधीश, so एक जगह है, अब वो धाम कहलाता है, is called Dakor. Dakor Dham is close to Ahmedabad in Gujarat. And जब द्वारिकाधीश वहां पर थे तो यहाँ पर एक भक्त बोडाना का नाम है, वो थे. From a very small age of childhood, every पूर्णमासी, he used to go, पूर्णमासी पे बहुत लोग जाते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने. तो वो बैलगाड़ी लेकर 350 किलोमीटर हर पूर्णमासी पे 8 साल की उम्र से जाते थे. बैलगाड़ी लेके he did not miss even a single पूर्णमासी from the age of 8 years old. Then he was in his 80s. And वो आ रहे थे तो उनको दिखाई देना कम हो गया था. तो आ रहे थे और आते आते उनको लेट हो गया. तो बोडाना, हाँ, भक्त बोडाना.
डाकोर के अंदर रहते हैं, डाकोर में जो मंदिर है उन्हीं के बगल में उनका घर है। सो तो वो वहां पर गए, पट बंद हो गए। पट बंद हो गए तो उन्होंने बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ द्वारिकाधीश, अब मैं अब मैं नहीं आऊंगा, है ना, आ नहीं पाता हूं मैं, अब मेरे को बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होती है। नाउ लुक हाउ मर्सीफुल इज द लॉर्ड, व्हेन यू हैव सर्व्ड लॉर्ड, ही सेड, तो द्वारिकाधीश सेड, अगले पूर्णमासी में फिर आना तुम, एंड मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ही सेड, भगवान मेरे साथ चलेंगे, मतलब कैसे चलेंगे भगवान मेरे साथ? एनीवेज, भक्ति के लिए सरलता चाहिए होती है, लॉजिक नहीं चाहिए होता है। जो सरल लोग होते हैं ना, सरल व्यक्ति, सरल होते हैं वो, टेक इट, भगवान बोल रहे तो हैं। जो कॉम्प्लिकेट होते हैं ना, वो लॉजिक लगाते हैं हर चीज में। प्रिजर्व योर लॉजिक फॉर स्टॉक मार्केट, व्हेन इट कम्स टू कृष्णा बी सरल, एक्सेप्ट इट एज इट इज, वरना लॉजिक ही लगाते रह जाओगे, उम्र खत्म हो जाएगी, ना भगवान मिलेंगे ना माया मिलेगी। तो ही वेंट, भक्त बुढ़ाना गए वहां पर, एंड उन्होंने बोला ठीक है, आ जाओ। तो द्वारिकाधीश बैठ गए बैलगाड़ी में, एंड भक्त बुढ़ाना इज राइडिंग, हाँक रहे हैं। 3 बजे डाकोर धाम के पास आते आते भक्त बुढ़ाना को नींद आ गई, और वहां पर बैलगाड़ी रुक गई। तो वहां से द्वारिकाधीश ने खुद स्वयं बैलगाड़ी चलाई डाकोर धाम तक। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। देन ही रीच्ड डाकोर धाम। अब डाकोर धाम जब आ गए, अगले दिन जब द्वारिकाधीश के पट खुले तो वहां पर द्वारिकाधीश है ही नहीं। तब पता लगा तो बोला, अगर किसी ने देखा है बैलगाड़ी में जाते हुए, कोई चोरी करके ले जा रहा था। ये कहानी प्रसिद्ध हुई। तो द्वारिका वासी वहां से आ गए यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, कि हमारे द्वारिकाधीश वापस दो, डाकोर धाम में। और डाकोर धाम वाले भी आ गए। कुछ मेरे पास फोटोज हैं, अभी रेडी नहीं है, अदरवाइज मैं दिखाता, एंड मे बी व्हेन यू हैव लंच आई विल पुट सम। सो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला, हम तो नहीं देंगे, ये खुद आए हैं भगवान चल के, इस हमारा विष तो हम चोरी करके तो ना लाए। पूरी स्टोरी बताई, ये किया वो किया। तो वहां पर एक तालाब बनाया गया, उस तालाब में भगवान को छुपाया गया, उसको कहते हैं गोमती ताल। एंड देन वहां से फिर भगवान को, फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, जितना भगवान का वजन है उतना सोना हम आपको दे देते हैं, और फिर आप भगवान को यहाँ रहने दीजिए, डाकोर वासियों ने बोला। तो एक तराजू बनाया गया, जो कि जिसपे एक साइड पे भगवान रखे गए द्वारिकाधीश, दूसरे साइड पे सोना रखा गया लाके। और पूरे गांव वाले, आस पास के अगल बगल के 90 गांव वाले आ गए, तब भी इतना सा सोना आया। गांव वाले के पास कितना सोना होगा, रख दिया सारा सोना, वो हिला ही नहीं। तब भक्त बुढ़ाना ने बोला कि इस पे तुलसी पत्ती रखो। उन्होंने इतनी तुलसी पत्तियां रखी, एंड भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है कि इतनी सी तुलसी पत्ती रखने में वो ऐसे हो गया, बराबर हो गया। तो तुलसी महारानी जो है, इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज अ प्लांट। स्पिरिचुअलिटी एंड भक्ति को समझने के लिए तत्व को पकड़ना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल इज नॉट फिजिकल, राइट? फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में इट्स अ प्लांट, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो भक्ति देवी है। भक्ति इज नॉट गिवन बाय कृष्णा, कृष्णा गिव्स ओनली इंस्ट्रक्शंस, ये करो ये मत करो, ये करो ये करना चाहिए तुम्हें, सरेंडर टू मी, आई एम गॉड, ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस। भक्ति कौन देता है? भक्ति देवी देती है, विच इज तुलसी महारानी। तत्व को समझना चाहिए। राधा इज अ तत्व, बलराम इज अ तत्व। राधा इज द तत्व, डिवोटी, highest form of devotion, Radha. So
तो बिकॉज अब वो तुलसी जी रख के वो बराबर हो गया, तो नोबडी कैन आर्ग्यू। तो द्वारिकावासी ने एक्सेप्ट कर लिया अपना फेट दैट भगवान यहाँ रहना चाहते हैं, तो भगवान यहाँ पर रहे, हम इट्स वी आर फाइन, भगवान की जैसी इच्छा। तो द्वारिकावासी जब जाने लगे तो भगवान ने उन्हें बोला कि मैं वहां पर कुछ समय के बाद फिर से प्रकट होऊंगा, तो आप द्वारिकावासी मुझे निकाल सकते हैं जमीन में से खोद के। तो वहां पर द्वारिकावासी ने उनसे रुका नहीं गया, उन्होंने थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया द्वारिकाधीश को। इसीलिए द्वारिकाधीश की आंखें नहीं हैं। It was not formed. Some of the limbs were not formed. He was a premature baby. So that is Dako. So original Dwarikadhish with the most beautiful eyes and the most beautiful smile is in Dakor Dham. Shri Dakor Dham ki jai. So I have डाकोर धाम का प्रसाद एंड द तुलसी जो ऑफर की जाती है वहां पर डाकोर धाम को फॉर ऑल ऑफ यू। आई वाज देयर डे बिफोर यस्टरडे, एंड वो ताल पे बैठ के हमने कीर्तन किया, एंड एंड स्पेशल दर्शन किए, एकदम सामने से भगवान ऐसे हैं। तो और वो फाइटिंग जब हो रही थी ना, तो भगवान द्वारिकावासी और डाकोर वासी में फाइटिंग हो रही थी, तो एक भाला भगवान को लगा यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर हमेशा पट्टा रहता है। Yeah. So our culture, our history is so beautiful. इसमें इतना हार्ट को हीलिंग मिलती है when we hear stories of Krishna. No, the world is a place we sing our first aarti in the morning, Samsara Dava Navlida Loka. The world is on fire. Samsara Dava. It's on fire. The fire. And the material world gives you hurt. The spirituality gives you healing. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कोई एजेंडा नहीं है ना, कोई एजेंडा नहीं है। क्या एजेंडा? कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, कृष्णा। Then you get Krishna, Krishna gets you. That's his agenda. So there is only healing. There is nothing. Love is what? We said love is the highest. Love is acceptance. Love is acceptance. The most fallen, next time पे जगाई मधाई की स्टोरी बताऊंगा मैं। They were the most fallen. Chaitanya Mahaprabhu lifted them up. Most fallen means most fallen. They were visiting prostitutes and they were doing all kinds of bad things. But if God also starts judging, then वो भगवान नहीं होंगे ना। If somebody says and prays to God, I have done this wrong, now I am here, will God say कि नहीं भाग जाओ यहाँ से, तुमने गलत किया है? No. So love is acceptance. No matter what you have done in your life, now you are here. Hari Bol. So we can conclude here. What's the time, Prabhu? 1 o'clock. Yeah, okay. So any questions anybody has?